हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा सोनी। और बताओ कैसे हो आप लोग। सो नाउ आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ एक बिगनर्स मेकअप ट्यूटोरियल। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए करते वीडियो का स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये सनस्क्रीन, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो सनस्क्रीन हमारे लिए स्किन के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है एंड हमारे स्किन को डल एंड टैन होने से भी बचाता है। अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं मेबलिन का प्राइमर, ड्रीम वन डे परफेक्ट प्राइमर है ये मेबलिन का। बस इतना लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में है। नेक पर भी बचा हुआ अमाउंट लगा देंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ स्टे क्वालिटी का फाउंडेशन, जो कि उनका न्यू लॉन्च है, जिसमें मेरा शेड है 01। सो इसका कैप इस तरीके से, इसका कैप है इस तरीके से, इसका बॉटम है और इसको बस एक पंप से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है अपने पूरे फेस पे इस तरीके से, आईलिड के ऊपर, फोरहेड पे। पूरे फेस पे इस तरीके से डैप 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 करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा लेना है। अब हम यूज करेंगे ये वेट एंड वाइल्ड का कलर कैरेक्टर पैलेट में से ये वाला शेड, कंसीलर शेड, ये वाला। अपने आईलिड के ऊपर इस तरीके से ब्लैक है, सो इसको भी कवर करने के लिए वैसे उतनी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी सी पूरी ब्राइट हो जाए। अब हम यहाँ लेंगे मेला वोस्टे का कॉम्पैक्ट, जिसमें मेरा शेड है शेड नंबर 2 क्रीम का।
और इसी स्पंज की हेल्प से मैं अपनी आईलिड को पहले सेट करूँगी, जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया ताकि मेरा कंसीलर क्रीज ना करे। और अपने पूरे फेस को इस तरीके से सेट कर लूँगी। अपनी ईयर के अराउंड भी एंड अपनी नेक पर भी। अब मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड पैलेट से ये वाला पैलेट, और इसमें से ये वाला शेड पिक करूंगी अपनी ब्राउ को फिल करने के लिए एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से। और इसी तरीके से दोनों ब्राउ को, और अब मैंने अपनी दोनों ब्राउ फिल कर ली है। अब मैं वेट एंड वाइल्ड से मैं ये वाला ट्रांजिशन शेड लूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। आईलिड पर भी डार्क ब्राउन शेड पिक करूंगी, ये वाला। इससे मैं आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूंगी। हुडा ब्यूटी ड्यूब्स पैलेट में से मैं ये वाला शेड पिक करूँगी। ये सिमरी शेड है, ब्लैक गोल्डन है, और एक पॉइंटेड ब्रश ले लूँगी और अपने इनर कॉर्नर पे इसको प्लेस कर दूँगी। कोई हार्श लाइन ना बने और हमारा आई साइड अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। सेम ऐसे ही इधर भी करना है। आप देख सकते हो मेरी दोनों आईज। अब मैं यूज करूँगी स्टेप वर्की का ये लिक्विड लाइनर और एक पतला सा विंग ड्रॉ करूँगी।
का मस्कारा 10x मस्कारा है। ये वाटर प्रूफ मस्कारा नहीं है, बट ये आपके लैशेस को बिल्कुल जूम कर देता है। अब देखोगे कितना अच्छा है। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई फॉल्सेस लगाई हो। अगर आपको फॉल्सेस लगाना पसंद नहीं है तो आप ये मस्कारा लगा सकते हो। वाटर प्रूफ भले ही ना हो, बट ये फैलता नहीं है। लोअर लैश लाइन पे भी लगा लेंगे। ये देखो, आपको मेरी दोनों आईज में फर्क दिख रही है। हमें यहाँ काजल के लिए यूज कर रही है स्टे का आई लव यू टू काजल, जो कि बहुत ही अच्छा काजल है। जेड ब्लैक काजल है और ये वाटर प्रूफ स्मच काजल है। अपने आउटर वाटर लाइन से ले जाते हुए इनर वाटर लाइन तक अपनी आंखों पे इस तरीके से प्लेस करना है। अब मैं अपने करूँगी अपनी नोज एंड फेस को कंटूर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का कंटूर स्टिक्स, जिसमें मेरा शेड है NYB FCS 6 टॉफी। तो इसको अपनी नोज पे इस तरीके से जॉ लाइन पर कंटूर ब्रश की हेल्प से मुझे अपनी नोज हैंड से ही करना पसंद है। मैं हैंड के साथ ही करूँगी, इजीली हो जाता है हैंड के साथ। मैं अपने फेस को करूँगी कंटूर ब्रश। ब्लेंड कर देना है, इधर भी इस तरीके से ब्लेंड कर देना है। जॉ लाइन को भी ब्लश के लिए मैं यहाँ यूज करूँ मेकअप एवोल्यूशन का ट्रियो पैलेट से ये वाला शेड। बोन को भी हाईलाइट करूंगी। एंड माय बेस मेकअप इज डन। तो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ स्टे का डेडस लिपस्टिक्स, जिसमें मेरा शेड है 20 रॉक माई वॉल्स 20 और ये पिंकी सा न्यूडी शेड है। और इसी लिपस्टिक से मैं अपना आउटलाइन बनाऊंगी इस तरीके से।
फेसिस कनाडा का मेकअप सेटिंग स्प्रे और अपने फेस को सेट कर लिया। अब मिलती हूँ आपसे हेयर एंड ज्वेलरी के साथ। सो यस, आपको कैसा लगा मेरा मेकअप? तो ये था मेरा स्टेप बाय स्टेप मेकअप। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा हो और मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, फ्रेंड एंड फैमिली सबके साथ शेयर कर दे और बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।